So we have already seen few topics from your pharmaceutical engineering in the previous sessions. So if you have not seen, you have not attend that lecture. अगर आपने वो पहले वाले lectures attend नहीं किए हैं, तो आप recorded video जो है वो देख सकते हो. And today we'll see material construction because this topic is also important. If you see the previous year's paper, they have already asked the question on this, and they have already asked 3 or 4 times. So this topic is important, and there are few topics, other topics like flow of fluid, that is also important, that we are going to see in the upcoming sessions. Flow of fluid, transportation of fluid, then mixing is there, then humidification, dehumidification. Okay, so these topics are important. We have seen size reduction, size separation, drying, evaporation, then distillation, crystallization. These topics we'll see only material construction today, and establishment of industry, humidification, dehumidification, that will be covered in the another session. We'll try to complete the material construction today. So material construction, what kind of material you are using for construction of your pharmaceutical industrial equipments. So this topic is based upon that only. जो भी pharmaceutical industry में लगने वाले equipments होते हैं, जैसे boiler हो गया आपका, या फिर evaporator हो गया, या फिर distillation unit हो गया, distillation steel हो गया, any support हो गया, pharmaceutical support, pipes, iron, etc., etc. So whatever the material, whatever the different type of construction or different type of equipment you are uh, using in the industry. So different equipments required in the industry that will be constructed by using various kind of material. So like iron, then steel, cast iron, modified iron, steel, stainless steel, etc. Modified steel. Then glass is also there. Then aluminum is also there. Then then rubber is also there. Glass, rubber, aluminum, then iron, okay, stainless steel, various type of stainless steel that are used as a construction material for various for designing of various kind of equipments used in the industry. इंडस्ट्री में जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे आपका ये वीडियो है, फ्लूइडाइज्ड बेड है, या फिर टैबलेटिंग मशीन हो गई. तो टैबलेटिंग मशीन ऐसे ही थोड़ी बनी, कोई ना कोई मटेरियल यूज करके ही बनाया ना उसको. स्टेनलेस स्टील हो गया या फिर आयरन हो गया, है ना. सो दैट मटेरियल is very important. Okay, because material should have certain specifications. Okay, it should have enough strength, it should be readily available, it should be economical, likewise that it should not go on corrosion नहीं होना चाहिए उसका. It should be stable, it should not release the content of material in the pharmaceutical preparation, etc., etc. Suppose that you are preparing a syrup, you have stored the around 1 lakh of 1 lakh liter syrup in the big tank, big constructed tank. So that tank should not release the material of construction. That means if that tank is made up of iron, that it should not, the tank should not release the ions in the syrup. Okay, so that will contaminate yourself. So you have to take into consideration different factors. What is important for GPAT, we are going to see that, but I'm just trying to elaborate what is material construction, why you have to study this material construction. So material construction in the pharmaceutical industry. So different number of equipments, they are used in the manufacturing of drug, antibiotics, biological, and wide variety of other products. So in that, for those equipments, a different kind of material is used to construct those. So what are these material we are going to see. Okay, so success of any company, that depends on the three things. So first one is the equipment design. So how equipment are designed in their company. So success of their company is depend on equipment design, material selection, then fabrication technique. So these are just points how any company will success, any pharmaceutical company will success. Selection of material construction for equipment depends on the chemical resistance. So whatever material you are using, अपने अगर आपको कोई बॉयलर बनाना है या फिर आपको कोई डिस्टिलेशन यूनिट बनाना है, so that whatever material you are using for distillation unit, that should be chemical resistant, that should be water resistance, that should have structural strength, that should have enough mechanical strength. That particularly, for example, in case of aerosols, so in case of aerosol, your container should have enough mechanical strength to withstand with the high pressure. So that's why this material construct, whatever material you are using for construction of either your containers or other equipments, that should have enough strength, structural strength. Then again, the material should be resistant to physical and chemical shock, physical, chemical, and thermal shocks. Okay, so it should not be with easily wear and tear.
जल्दी से मतलब फटना नहीं चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है. It should have enough strength, physical strength, as well as it should be resistant to physical and chemical shocks. Suppose that you require a reaction, you require a concentrated sulfuric acid for a particular reaction to be carried in the bulk drug. जैसे आप bulk drug synthesis करते हो तो उसका इंडस्ट्री है आपका. सो इन दैट केस आपको रिएक्शन करना पड़ता है, बड़े बड़े रिएक्टर्स होते हैं. ओके, सो इन दैट केस यू हैव टू यूज कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स, अल्कली एंड ऑल दैट. So your material should be withstand with that alkali attack, withstand with that acid attack. So it should be chemically resistant. Okay. Then while selecting the material for construction, you need to take one more factor into consideration, that is ease of fabrication and maintenance. Suppose that if any material is very nice, it is a almost having all ideal properties of material for construction, but it is not easily molded. ठीक है, वो उसका शेप नहीं दे सकते. आपको ऑटोक्लेव बनाना है, ऐसा कैसा स्टील लेके आए कि वो उसको फैब्रिकेशन करने में भी दिक्कत आ रहा है, आपको फैब्रिकेशन ही नहीं हो रहा, आपको तो ऑटोक्लेव चाहिए 30 लीटर्स का, ठीक है, तो उसको फैब्रिकेशन भी करना आना चाहिए. सो सिलेक्शन ऑफ थर्मल मटेरियल कंस्ट्रक्शन फॉर इक्विपमेंट डिपेंड्स ऑन द chemical resistance. Selection procedure, you have to take while selecting the material for construction, you have to take certain factors into consideration. So first one is that is nothing but the chemical resistance. The material whatever is it should be resistant to chemicals like acids, alkali and all that. So ideally whatever material you are using, so it has certain advantages. Then structural strength, then resistant to physical and thermal shock, ease of fabrication, cost, economical factors, and maintenance, etc. So you have to consider these factors while selecting the material for construction. Physical and chemical factors that affect the selection of material construction for your pharmaceutical plant. Your material should have enough strength. So strength must be sufficient. For example, in case of your aerosols, aerosol is nothing but the pressurized formulation where you need a very tough container. Okay, you need a very tough container. That means a container for aerosol should withstand with a high pressure like 960 kilopascal to 1.2 mega kilopascal. So that is mentioned in the kilopascal. This was also question in GPAT. So one of the following dosage form, mechanical strength of container is a primary requisite for one of the following dosage forms. Aerosol. So aerosol container should withstand with the high pressure. कि एरोजोल कंटेनर जो है आपका स्प्रे या फिर आप जो भी परफ्यूम वगैरह यूज करते हो, उसने उसको देखा होगा आपने, एल्यूमिनियम का कंटेनर मैक्सिमम टाइम होता है उसका एल्यूमिनियम का, या फिर मैक्सिमम टाइम ग्लास का कंटेनर होता है. लेकिन दूसरा कोई कंटेनर नहीं, ग्लास एल्यूमिनियम दोनों टाइप का. प्लास्टिक का देखा है कभी नहीं. ओके, प्लास्टिक का नहीं होगा बिकॉज your aerosol formulation is nothing but the pressurized formulation, and the whatever container you are using for that, it must withstand with the high pressure up to 960 kilopascal to 1.20 mega kilopascal. So that should withstand with the high pressure. That is your material should have enough strength. Then again, mass of that material, or okay, mass of that material, physical mass of that material. So suppose that your material is very your material has very high weight, so uh, it is not easy to transport that material from one place to another place. अगर आपका जो मटेरियल है उसका वेट ही बहुत ज़्यादा है तो इट इज़ नॉट इजी टू ट्रांसफर. तो उसका आपके अकॉर्डिंगली उसका वेट भी कंसिडर करना पड़ेगा आपको. वियर एंड टियर प्रॉपर्टीज मतलब ये कितनी जल्दी टूटेगा, खराब होगा. मास, वियर एंड टियर प्रॉपर्टीज, फिजिकल स्ट्रेंथ. ओके, you have to take into consideration. Again, transportation cost, friction during milling. Friction during milling is or deterioration during milling. So that you have to consider ease of fabrication and all. Now, thermal conductivity is again very important. Thermal conductivity is important in case of heat operations. Here there is a involvement of heat. For example, drying, evaporation, distillation. So in that case, your material should be have high thermal conductivity. अगर आपका मटेरियल है उसमें थर्मल कंडक्टिविटी कम है तो डिस्टिलेशन जल्दी नहीं होगा. आपका जो मटेरियल है उसका कम होगा थर्मल कंडक्टिविटी, ड्राइंग कम होगा. सो ए मटेरियल शुड हैव हाई थर्मल कंडक्टिविटी इफ द मटेरियल यू वांट टू कंस्ट्रक्ट और इक्विपमेंट you want to construct for drying, evaporation or heat exchange. So that should have proper thermal conductivity. Thermal expansion, material construction should have less thermal expansion, should have मिनिमम थर्मल एक्सपेंशन. ईज ऑफ फैब्रिकेशन, सो उसको मोल्ड करता आना चाहिए. जैसे इफ यू वांट टू गेट अ डिजायर्ड शेप, सो इफ यू वांट टू डिजाइन ए autoclave in your own shape or on your own design, then the material should be
that whatever material is available, that should be easy to fabricate, so that you can design the autoclave. For example, glass, it is very easy to fabricate the glass in any kind of shape. आपने देखा होगा आपका ग्लास कैसा होता है, वाइन का ग्लास कैसा होता है, नॉर्मल कांच का ग्लास कैसा होता है, बिकॉज ग्लास इज इजी टू फैब्रिकेट. प्लास्टिक इज आल्सो इजी टू फैब्रिकेट, इजी टू मोल्ड इन अ डिजायर्ड शेप. आपको जो भी शेप में चाहिए उसको उसको बना सकते हो, ग्लास को, प्लास्टिक को इजीली. एग्जांपल ले लो कि आप आयरन है, तो आयरन को इजी नहीं बना सकते. यू हैव टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स, यू हैव टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स फॉर iron or metal to get a desired shape. Then again, cleaning and sterilization. So whatever material you are using for construction of any utensil or any equipment of pharmaceutical use, material should be easy for cleaning, then easy for sterilization. For example, in case of autoglue, so it should withstand with the high pressure. Material should withstand with the high pressure. कि चलो आपने प्लास्टिक का ऑटोक्लेव बना दिया, कैसे कर लेंगे स्टेरिलाइजेशन, वो प्लास्टिक का फट जाएगा, प्रेशर ही सहन नहीं कर पाएगा, और प्रेशर प्लास्टिक कैन नॉट withstand with the pressure and heat. So that's why while selecting the material, you have to take into consideration what is the use of that material, what is the use of that equipment. If you want to design autoclave, you have to use good quality stainless steel, which are having highest thermal conductivity and less thermal. Are you getting or not? Then again, transparency and economic factor. For example, transparency is important in case if you want to see your progress of product. जैसे आप मिक्सिंग कर रहे हो, आपको दिखना देखना है कि मिक्सिंग प्रॉपर हो रहा है नहीं बाहर से, तो इन दैट केस आप ग्लास लगा सकते हो, ग्लास विंडो, ठीक है, मिक्सर में ग्लास विंडो छोटा सा. तो दैट इज यूजफुल फॉर that is useful for the online monitoring of your process. Then economic factor. Obviously, if material is very costly, you cannot afford it. If it is very cheap, anyone can afford it, like that. So these are some factors. Now what is important for GPAT, we'll see. Okay, so your material construction or material for construction can be divided into different types. So material for construction divided into different types. So it may be either metals, it may be either metals, it may be either नॉन मेटल्स. एक मेटल हो सकता है, नॉन मेटल हो सकता है. तो मेटल्स में क्या है, मेटल्स में मेटल्स आर आइदर इट मे बी ए फेरस मेटल और आयरन मेटल. फेरस मतलब आयरन, फेरस एंड नॉन फेरस. फेरस इन दैट फेरस में बहुत सारा आता है, जैसे कास्ट आयरन, स्टील कार्बन एंड स्टेनलेस स्टील. कास्ट आयरन, ओके, देन स्टील कार्बन and stainless steel. So this cast iron means iron plus carbon in a very less amount, less than 1.9%, sorry, beyond the 1.9%. This is cast iron. Steel carbon, इसमें फेरस, इसमें आयरन कम होगा, स्टील कार्बन में आयरन का क्वांटिटी कम होता है. Then stainless steel is highly resistant, stainless steel. So all these are the ferrous and other metal containing material. The non-ferrous material includes your aluminium. So you might have seen the container used in the aerosols that are made up of aluminium. Aluminium foils are also used. Aluminium foils are mostly used for packing purpose. So you have seen. So whatever tablet strips you are getting over there, so that tablet strip are made by aluminum foil. Okay. Then lead is also there. These are the metals. Okay. Non-ferrous metal. Then inorganic material like non-metal, like in that you have inorganic glass. So glass क्या है, inorganic है. Glass is inorganic. Then organic में आता है आपका rubber and plastics. तो organic में non-metal में क्या आएगा, rubber and plastic. Organic rubber and plastic में भी कार्बन होता है, rubber में भी कार्बन हाइड्रोजन होता है. So that's why they comes under organic. So these are the different classification of material for construction. Classification of material for construction. इसके ऊपर भी कभी क्वेश्चन आएगा. क्वेश्चन किसके ऊपर आएगा वो बोलने के लिए मैं बैठा. Now next we'll see. As you are a pharmacy professional, you should have enough knowledge regarding the material available for construction of different equipments. Their selection depends on, I already told you, like chemical resistance, structural strength, physical shock resistance, thermal shock resistance, then production cost and maintenance. Material should have enough strength. It should have enough. It should have enough strength. It should not have wear and tear properties. It should have high thermal conductivity in case of, that is desired in case of, if there is if you are designing the equipment for heat transfer mechanism or heat operations. So in that case, thermal conductivity is desired one. But if you are not using, if you are not designing for heat operations, then thermal conductivity is not much important. Then thermal expansion should be less.
ease of fabrication, cleaning, validation, cleaning, sterilization, transparency, economy. These factors we have seen. Okay. Are you getting or not? समझ रहा है कि नहीं? These are the different factors which you have to take into consideration. First one is a cast iron. तो cast iron और cast iron आप जैसे pronounce करना है वैसे कर सकते हो. Cast iron. So in that case, in case of cast iron, so cast iron is nothing but it is a mixture of your iron and plus 1.5% or more carbon. That is known as a cast iron. Now, cast iron is resistant to concentrated sulfuric acid for corrosion. Nitric acid also. So resistant against the nitric acid and sulfuric acid for corrosion. Okay, and dilute alkali. It is a very hard material, cast iron, not easy to machine or not easy to mold. Mold is not a correct term, but easy to machine is a correct term. Easy or not easy to machine. मतलब machine बनाने में ये easy है नहीं है. So it is not easy to machine. So but dilute acids will attack on this cast iron and will corrode it. Okay, it has a low thermal conductivity, so it is not used in case of where there is a heat operation is on. For example, in case of steels, evaporating steel आपको बनाना है, तो in that case आप cast iron यूज नहीं कर सकते. In that case आपको ऐसा मटेरियल ढूंढना पड़ेगा जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है. Now this cast iron is used for construction of supports for the plants, jacket of steam plants, जैसे steam jacket कितनी होता है, jackets, then lining with enamel, प्लास्टिक के ऊपर कास्ट आयरन का लाइनिंग करेंगे, suitable for victim material. So that is a cast iron. Now cast iron is modified by altering the different alloying, or cast iron can be modified. ये जो कास्ट आयरन होता है उसमें दूसरे कुछ मेटल डालेंगे जैसे सिलिकॉन, निकेल, क्रोमियम, सो दैट उसका जो करोजन का है वो करोजन रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, थर्मल कंडक्टिविटी उसका हाई हो. ऐसा you can modify by using by alloying with silicon or nickel or chromium. तो कास्ट आयरन में आप चेंज कर सकते हो जैसे डिजायर्ड है. अगर आपको स्टील बनाना है या फिर इवेपोरेटिंग पैन बनाना है, so in that case you require high thermal conductivity, so you can add nickel is having high thermal conductivity. So this silicon, nickel, chromium, they will also increase the physical strength, they will cause corrosion resistance material. So addition of these silicon, nickel, chromium, they have different property. They will the cast iron will be modified. Then next one is stainless steel. So it is alloy of iron plus other material like silicon, nickel, chromium. That is nothing but the stainless steel. It is a alloy of iron with the chromium and nickel. ये chromium, nickel, iron इसके साथ तीनों में लगे बोलता है stainless steel. So it is a alloy of iron with chromium and nickel. It is a corrosion resistant, heat resistant, easy for application. Ease of application is there. Then cleaning, sterilization also easy. It also has a good tensile strength. So that's why most of the equipments used in the industry, they are made of stainless steel. Now ये आपको कोई नहीं पूछेगा, अभी ये पूछा है. This was question in GPAT 21. इसी टेबल के ऊपर क्वेश्चन आया था. तो ये पूछा है, इसने क्या पूछा है, टाइप्स ऑफ आयरन, टाइप्स ऑफ आयरन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयरन. कितने टाइप होते हैं आयरन. सो टाइप ऑफ कास्ट आयरन, कंपोजिशन क्या है उसका, प्रॉपर्टीज क्या है उसकी, और डिसएडवांटेज. तो फर्स्ट वन इज अ ग्रे कास्ट आयरन. ये टेबल इंपॉर्टेंट है आपका, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है जी. तो ग्रे कास्ट आयरन, so it is made up of your iron plus carbon plus silicon. Gray cast iron is made of carbon, silicon plus iron. It has a very low cost, easy to cast into intricate shape or in any shape. You can mold this gray cast iron in any shape. It has a very low cost, you can mold into different shape. Okay, and it is used for the grinding balls and dies and impellers. So for example, जो बॉल मिल में बॉल यूज करते हैं, दैट इज मेड ऑफ ग्रे कास्ट आयरन. इम्पेलर्स मतलब जो मिक्सिंग के लिए प्रोपेलर इम्पेलर जो होते हैं, दैट इज आल्सो मेड ऑफ ग्रे कास्ट. बट इट हैज डिसएडवांटेज ऑफ ब्रिटल, इट हैज ब्रिटलनेस, पुअर रेजिस्टेंस टू इम्पैक्ट. अगर इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट हो गया तो दैट हैज अ पुअर रेजिस्टेंस. इट हैज अ वेयर एंड टेयर प्रॉपर्टी. ओके, सो इट हैज अ पुअर रेजिस्टेंस टू इम्पैक्ट एंड शॉक, मींस इट हैज अ वेयर एंड टेयर प्रॉपर्टी. दैट इज अ ग्रे कास्ट आयरन. And next one is a millable iron or iron. So it is also known as a white cast iron or white cast iron. So in this carbon content is 2.5%. So बाकी उसमें ये भी होगा, आयरन भी होगा,
सिलिकॉन भी होगा लेकिन कार्बन कंटेंट क्या है 2.5%। सॉरी इसमें सिलिकॉन नहीं होता, इसमें सिर्फ आयरन एंड कार्बन, तो दैट इज नॉन एज अ मिलेबल है। इसका प्रॉपर्टी क्या है, करोजन रेजिस्टेंस इज अ यूज्ड इन द, it is used as a corrosion resistant, it has a corrosion resistant property and it is a corrosion resistant type 1। so corrosion resistant के लिए भी उसमें उन्होंने टाइप दिए है, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3। तो उसमें ये मिलेबल आयन जो है that comes under the corrosion resistant type first and easy to machine, that can be easily made into machine। okay? टाइप सेकंड जो होता है करोजन रेजिस्टेंट, टाइप सेकंड इज जो मिलेबल आयरन है उसमें भी दो टाइप है, टाइप 1 एंड टाइप 2। तो करोजन रेजिस्टेंस इज टाइप 1, टाइप सेकंड इज लेस लेस इजी टू मशीन। तो इसमें क्वेश्चन कैसा आया था मैं आपको बताऊंगा बाद में, कंप्लीशन ऑफ दिस स्लाइड आई विल टेल यू। देन थर्ड कैटेगरी ऑफ आयरन इज अ हाई सिलिकॉन कास्ट आयरन। so in this silicon content will be higher, so here iron plus silica plus, so silicon content is around 13 to 60%। okay, that is known as a high silicon cast iron। it is a resistant to corrosion, resistant to corrosion, easily आपका corrosion नहीं होगा इसका, acid का, alkalis का या फिर water का। resistant to oxidizing and reducing environment, used in the sulfuric acid services। ठीक है, मतलब if you want to, if you are engaged in the manufacturing of sulfuric acid, अगर आपने sulfuric acid का बैच बनाया वहाँ पे concentrate sulfuric acid बनाया, ठीक है, आपका टैंक में है, अभी आपको ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए आपको पाइप्स वगैरह लगेगा, तो दैट सल्फ्यूरिक एसिड सर्विस के लिए जितना भी मटेरियल लगता है दैट इज मेड अप ऑफ हाई सिलिकॉन कास्ट आयरन। देन इट इज नॉट मशीन्ड एंड वेल्डेड, इट इज नॉट इजीली मशीन्ड एंड वेल्डेड, इसका इजी नहीं है मशीन बनाना या फिर वेल्डिंग, वेल्डिंग के लिए। नेक्स्ट वन इज निकेल रेजिस्टेंस, निकेल रेजिस्टेंट कास्ट आयरन, इसमें निकेल कंटेंट होगा, इसमें क्या होगा, निकेल होगा। so in addition with your ferrous, in addition with your iron plus silicon plus carbon, you have nickel over here। so nickel makes high toughness, it is responsible for the toughness। so superior toughness, जो toughness होगा इसका superior होगा, resistant, impact resistance है इसका, easy to weld and machine, corrosion and heat resistant, that is a nickel resistant cast iron। but it has a disadvantage like oxidizing agent like nitric acid are highly detrimental, less attack from alkaline solution, another disadvantage। so now question was like this in GPAT 2021। so they were asking types of cast iron and they was given in another column they was given the composition, they were asked match the types of cast iron with their respective composition। ऐसा क्वेश्चन आया था, कास्ट आयरन क्या है और उसका कंपोजिशन क्या है। ग्रे कास्ट आयरन में क्या होता है, याद रखो सिलिकॉन कार्बन, सिलिकॉन कार्बन इन एडिशन टू योर आयरन। केवल आयरन में क्या होता है, ज्यादा होता है, 2.5% कार्बन होता है। सिलिकॉन कास्ट आयरन में 13 to 16% सिलिकॉन होता है, ये क्या याद रखो, इसके ऊपर ऐसा क्वेश्चन है। नाउ वी सी द नेक्स्ट वन, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ, अगेन डिफरेंट, ओके, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलॉय ऑफ कार्बन स्टील, डिफरेंट काइंड ऑफ एलॉय ऑफ कार्बन स्टील, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया, पेपर देख लो। सो वैरायटी ऑफ कार्बन स्टील, then composition and advantage। first one is a low alloy steel, low alloy steel, इसमें मतलब इसमें दूसरे मेटल्स कम होंगे। लो कंसंट्रेशन ऑफ आयरन, इसमें कंसंट्रेशन आयरन का कम होता है। लो alloy steel, low concentration of iron, carbon, manganese, nickel and chromium and molybdenum। it has a high mechanical strength, it is a corrosion resistant and wall of plant can be, so that is the low alloy steel। now alloying with the nickel, steel alloying with the nickel, स्टील अलोइंग विद द निकेल, तो इसमें क्या होगा, निकेल का एडिशन होगा इसमें ज्यादा क्वांटिटी। निकेल विल इंक्रीज द स्ट्रेंथ, हार्डनेस एंड करोजन रेजिस्टेंस, इंप्रूव द लो टेम्परेचर प्रॉपर्टीज। अलोइंग विद द सिलिकॉन एंड क्रोमियम मींस स्टील प्लस दिस, और आपका जो आयरन है दैट प्लस निकेल एंड क्रोमियम। सो अलोइंग विद द सिलिकॉन एंड क्रोमियम, सो निकेल क्रोमियम कंपोजिशन है उसका। इट इज अ एब्रेजन, इट हैज अ एब्रेजन, करोजन एंड ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। सो लो एलॉय स्टील अलोइंग विद द निकेल अलोइंग विद द सिलिकॉन, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है जीपैट 21 में। ठीक है, वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्टील हाईली करोजन विल हैव हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, दैट इज अ लो एलॉय स्टील। हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ किसको है, ऐसा क्वेश्चन है जीपैट 21। नाउ विल सी द नेक्स्ट वन इज डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेनलेस स्टील, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, ये चार्ट भी इंपॉर्टेंट है। different type of stainless steel. Now first one is different types of stainless steel, their composition, advantage, disadvantage and their uses। so this kind of table I have made, it is a hybrid table,
इट इज ओनली प्रेजेंट इन माय बुक, बाकी इसमें नहीं मिलेगा। सो मतलब बाकी इसमें क्या मिलेगा आपको, दूसरा कुछ मतलब टेबल अलग मिलेगा। इसमें मैंने हाइब्रिड बना के डाला है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेनलेस स्टील। सो फर्स्ट वन इज मर्टेन टेस्टिक टाइप 410, मर्टेन टेस्टिक टाइप 410 steel. It is made up of chromium, then carbon and nickel. Advantage that is a mild resistant to corrosion and atmospheric corrosion के लिए वो थोड़ा सा mild resistance है, ज़्यादा नहीं। And organic exposure. So it is a mild resistant to corrosion then atmospheric organic exposure. Then ductility is poor. Ductility is poor. मतलब ductility मतलब क्या कि आपको डक्ट बनाना है उसको, उसके लिए जैसे मान लीजिए आपने कोई स्टील बनाना है, उसको एक ये ऑपरेटिंग स्टील है, बाद में उसको कोई आपको डक्ट बनाना है, तो इट इज नॉट इजी टू मेक अ डक्ट ऑन molten static steel, molten static, then it is mostly used for sink, bench tops, then storage tanks, buckets, mixing element, etc. So this type of steel, molten static steel, is used for the sink, making the sinks, जैसे आप कॉलेज में सिंक होता है, बेंच टॉप्स, स्टोरेज टैंक्स, bucket, mixing and mixing element extra. Another type of steel is known as a favorite type 430. It consists of a chromium, carbon, nickel along with your ferrous. Along with your ferrous, it has a this steel मतलब क्या? Steel मतलब it is a grey का iron जो है, cast iron plus other metals, cast iron plus other metal to modify the properties of that cast iron. That is a steel. फेवराइट टाइप 330 430 में chromium, carbon, nickel along with your ferrous. So that is a another type of steel. So again it is a corrosion oxidation and temperature resistant. So it can withstand with 800 degree Celsius. So ये that is ये जो है स्टील ये टाइप का, तो 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे भी उसको कुछ नहीं होगा. So that is used mostly for फर्नेल या फिर जहाँ पे ज़्यादा हीट इन्वॉल्व है उसका डिजाइनिंग करने के लिए फेवरेट टाइप ऑफ 430 steel is used, but it is not acid resistant. So it is used for tower lining, baffles, separator, heat exchange tubes, then furnace, pumps and valves. So that is made by favorite type of 430 steel. Then next one is a austenitic type of steel. In that you have chromium, carbon and nickel. So it is a highly resistant to corrosion, easy to clean, easy to sterilize, easy to weld and non-magnetic. तो इसमें magnetic property भी नहीं आता है ज़्यादा. It is easy to clean and sterilize, not easy to mold or not easy to machine. Mostly it is used for fermenters, making the fermenters, storage tanks, evaporator extraction vessels. They are made of this authentic, authentic martensitic steel, favorite type of steel, and is austenitic steel. So आप pronunciation कैसे करना है आप देख लो, but these steels थोड़ा सा याद रखो, इसके ऊपर क्वेश्चन कभी-कभी आ जाता है. Now next one is a glass. Next one is a glass. So what is glass? Glass and its composition. Glass and its composition. So इसके ऊपर भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं ग्लास के ऊपर. Composition of glass. Glass is a super cooled liquid. Okay, glass is a super cooled liquid and it is a mixture of this. It will have sand. Sand means pure silica. It is a silicon dioxide. Okay, which is a basic material for glass. Base क्या है glass का? That is a pure silica, silicon dioxide. That is a base for glass. Then along with that is also has a soda ash. Soda ash means sodium carbonate, which will improve the properties of glass. Okay, sodium carbonate will improve the properties of glass. Then limestone. Limestone means calcium carbonate, which will improve the again properties of glass. Then cullates. Cullates means small broken pieces of glass, which will act as a fusing agent. इसके ऊपर एक क्वेश्चन आते हैं. So why cullates are used during the manufacturing of glass? So because these cullates means broken pieces of glass. छोटे जैसे अपन क्रिस्टलाइजेशन के लिए सीडिंग यूज करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन के लिए आप ऑलरेडी जो क्रिस्टल है वो सीडिंग के क्रिस्टलाइजेशन जल्दी हो इसलिए सीड बोल के यूज करते हो क्रिस्टल्स. Likewise that during the manufacturing of glass, cullates or broken pieces of glass you have to add, which will act as a fusing agent. Now some varieties of glass. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुके हैं वेरियस काइंड ऑफ एग्जाम, डिफरेंट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं टाइप्स ऑफ some varieties of glasses. So type of glass composition and advantage or use. So first one is a soft glass or soda glass. First one is a soft glass or soda glass. So it is made of a sodium silicate
and calcium silicate glass or soda glass. So question is about soft glass is also known as soda glass. So now this soft glass is used for making the your glass bulbs and window glasses. So whatever window glasses are there, they are made of this soft glass. Next one is a hard type of glass. हार्ड ग्लास और पोटेश ग्लास. तो देखो यहाँ पे हार्ड ग्लास और पोटेश ग्लास मतलब यहाँ पे पोटेशियम सिलिकेट होगा. सोडा ग्लास मतलब सोडियम सिलिकेट होगा. यू कैन कोरिलेट दिस. सो हार्ड ग्लास इज मेड ऑफ पोटेशियम सिलिकेट एंड कैल्शियम सिलिकेट. कैल्शियम सिलिकेट कॉमन रहेगा इसमें. ये देखो सोडा ग्लास मतलब सोडियम सिलिकेट, पोटेश ग्लास मतलब पोटेशियम सिलिकेट. सो हार्ड ग्लास इज मेड ऑफ पोटेशियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट. देन हार्ड ग्लास इज यूज्ड फॉर दिस glass apparatus which are acid resistance. जैसे आपका pipettes है. So whatever pipettes are there, pipettes, burettes, they are made up of a hard type of glass because they are acid resistant. The next category of glass is a flint glass or potash lead glass. potash lead glass इसमें क्या होगा, पोटेशियम सिलिकेट होगा और लीड सिलिकेट होगा. इसके नाम में ही रखा है फिंट ग्लास. इसके बारे में जीपीएट में क्वेश्चन पूछा है. सो फिंट ग्लास विल कंसिस्ट ऑफ दिस मटेरियल पोटेशियम सिलिकेट. Now for the optical instrument because of its refractive index. So ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है. Which one of the following type of glass is prepared in case of optical instruments? जैसे आपका UV हो गया या फिर रिफ्रैक्टोमीटर हो गया. तो for the construction of refractometer and UV prisms, monochromator like that. So flint type of glass is used. Flint glass or potash lead glass. Next one is Gilna glass. Gina glass. Okay, types of glass. Gina glass. So in that you have zinc silicate and barium silicate. Zinc silicate and barium silicate. याद रखो जिंक सिलिकेट बेरियम सिलिकेट का जो ग्लास है उसको बोलते हैं जिना ग्लास. नाउ जिना ग्लास इज यूज्ड फॉर laboratory type of glasswares. So whatever flask you are using, whatever flask you are using, round bottom flask, etc., etc., conical flask, then your whatever the laboratory glasswares are there, they are made up of your Gina glass. Remember, it is also acid resistant and alkali resistant. Gina glass is also acid and alkali resistant. They can ask you question. Laboratory glasswares are made up of one of the following type of glass. So Gina glass, or they either ask. The next one is a Pyrex glass. Pyrex glass के ऊपर GPAT 2019 में क्वेश्चन आ चुका है. ऊपर सिलिकॉन डाइऑक्साइड, बोरॉन ऑक्साइड एंड सोडियम ऑक्साइड, स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम. सो सिलिकॉन, बोरॉन एंड सोडियम ऑक्साइड्स. सो ऐसा ही क्वेश्चन था कि वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्लास कंसिस्ट ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, boron oxide and sodium oxide. So that is a Pyrex glass. So again it is useful for laboratory glassware reaction vessels. Okay, because it is heat resistant in nature. It can withstand with a high heat. So it is a quartz glass. Quartz. So it is a pure silica. Quartz glass is made up of pure silica. It is used for the silica crucible distilled water steel of high purity. It can withstand with the 1000 degree Celsius temperature. These are the types of glass. तो इसके ऊपर क्वेश्चन आपको एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है या फिर आपको मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन कैसे आएगा. एक कॉलम में देंगे आपको टाइप ऑफ ग्लास, एक कॉलम में देंगे आपको उसका यूज, एक कॉलम में देंगे टाइप ऑफ ग्लास या फिर एक कॉलम में देंगे उसका कंपोजिशन. यू कैन आस्क एनीथिंग. So they will give you types of glass in one column. They will give you their uses in the second column. Okay, and they will ask find the correct match or match the following type of glass with their respective use. ऐसा पूछेंगे. So in that case also you have to be. So इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं बहुत. ये पूरा important है. Now next one, ये चार्ट तो बहुत ही ज़्यादा important. Now next chart is this. This is very important chart again. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुके हैं. This is again very important chart. Types of glass used in the pharmaceuticals as per Indian Pharmacopy. IP के तहत कितने ग्लास? Type 1, Type 2, Type 3 and Type 4. There are 4 kind of glasses. Type 1 glass, it is known as a highly resistant borosilicate glass. Synonym B याद रखो, बहुत ही ज़्यादा important. So GPAT 2019. Type 1 glass is nothing but the highly resistant borosilicate glass. Direct question था. Type 1 glass is known as highly resistant borosilicate. GPAT 2009. So it is made up of alkali and earth cations which are replaced by boron. Okay, so borosilicate glass. So other cations like your sodium and all that are replaced by boron in the type first. Type first is known as the
highly resistant borosilicate glass. I am repeating it again and again because it is important. ये बाद में फिर आपको कंफ्यूज नहीं होना. टाइप फर्स्ट इज अ हाईली रेजिस्टेंट ग्लास. प्रॉपर्टीज क्या है इसके? रेजिस्टेंट टू अल्कली लीचिंग, रेजिस्टेंट टू अल्कली लीचिंग. इस टाइप के ग्लास में आपने वाटर रख के हीट किया उसको तो जो अल्कली रिलीज होने वाला है वो नहीं होगा क्योंकि all the other cations are replaced by boron. So it is a highly resistant borosilicate. It is a less brittle. It has a low thermal expansion, easy to clean and sterilize. So it is used in the container. It is used for the containers for buffered and unbuffered aqueous solution for and injectables. So ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि which one of the following glass is used for injectable, making the injecting containers of injectable type first class. Container for buffered unbuffered aqueous solutions, buffered unbuffered aqueous solution and injectable. They are stored in the type container made from type first glass. Are you getting or not? समझ रहे हैं आपको? Type first glass is a highly resistant borosilicate glass and it is used for the in making the container for injectables. जैसे आपका vials हो गया, आपका ampoules हो गया, they are made up of a type 1 glass. Type 1 means borosilicate glass. Type 1 is highly resistant borosilicate. Now type 2, treated soda lime glass. Treated soda lime. Type 2 is known as a treated soda lime glass. It has a highly hydrolytic resistant property. तो इसमें high hydrolytic resistant property है. ग्लास में वाटर डाल के हीट करेंगे ऑटोक्लेव में तो वो ज़्यादा रिलीज नहीं करेगा. हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस इज मोर. हाईली हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस ग्लास दैट इज अ ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास. जीपैट 2019 में दो टाइप के क्वेश्चन आए थे इसके. एक तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन था और एक द मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन. बाकी ये एग्जाम में भी आता है बहुत. टाइप सेकंड क्लास इज द ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास और हाईली हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस ग्लास. ट्रीटेड मतलब क्या? ट्रीटेड मतलब the surface of this glass is treated with the sulfur dioxide. You know that glass is made up of silicon oxide and other oxides, so other alkali oxides, silicon and other alkali oxides. Treatment of this surface of glass with the sulfur dioxide. So treated solar lime is treated surface of this glass with the sulfur dioxide vapors. Again, it is a glass surface is resistant to water. Used for the buffer aqueous solution pH below 7. The type of glass is used for storage of buffered aqueous solution pH less than 7. Then also used for the container for dry powders and oily solutions. तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं. Now type 3 glass. Type 3 glass is used known as a soda lime glass or simple soda lime glass. Type 3 glass is known as simple soda lime glass. It releases the alkali as compared to other. It releases more alkali and it has a moderate hydrolytic resistance and it is used for the dry powder and oily solutions. So container made up of this type 3 glass, they are used for the dry powders and oily solutions. Now type 4 glass. Type 4 glass. Type 4 glass is known as a general purpose soda lime glass. इसके ऊपर भी क्वेश्चन. So which one of the following is a general purpose soda lime glass? Type 4 glass. Type 1 क्या है? Highly resistant. Type 2 क्या है? Treated. Type 3 क्या है? Soda lime. And type 4 क्या है? General soda lime. ऐसा याद रखो. टाइप 1 क्या है? सबसे पहले प्रेफरेंस किसको मिलता है? जो बंदा टैलेंटेड है या फिर जो बंदा हाईली इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले प्रेफरेंस किसको देंगे आप? हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट. तो टाइप 1 इज हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट. उसके बाद में क्या है? ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास. उसके बाद में क्या है? सिंपल सोडा लाइम. उसके मतलब सोडा लाइम ग्लास. उसके बाद में क्या है? जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास. तो ऐसा आप याद रख सकते हो इजीली. ऐसा ट्रिक वगैरह. नाउ जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास इज यूज्ड फॉर द नॉन पेरेंटल. इसके ऊपर ऐसा क्वेश्चन आया था. इट इज यूज्ड फॉर द नॉन पेरेंटल यूज. फॉर एग्जांपल ए ग्लास कंटेनर फॉर टैबलेट is made up of the one of the following glass. So type 4 that is general purpose soda lime glass. Type 1 is used for the injectables. याद रखो type 1 injectable क्योंकि purity चाहिए वहाँ पे and resistance चाहिए. So that is used for injectable and buffered and unbuffered aqueous solution. ठीक है? Because it is a highly resistant. And type second is known as treated soda lime. Treated soda lime for buffered solution. Oily solutions and powder. Type 3 is known as soda lime glass for dry powders and oral solutions. Type 4 is known as general purpose soda lime and it is the container made from general purpose soda lime glass. They are used for non-parenteral use and container for tablet and oral solution suspension and made liquids for external use. तो इसमें ये सब है. This chart is very important. Again याद रखो शॉर्ट में. Type first highly resistant
हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट रेजिस्टेंस हाईली रेजिस्टेंट मतलब किसको रेजिस्टेंट सो रेजिस्टेंट फॉर अल्कली लीचिंग देन it is used for the container for buffered and unbuffered aqueous solutions then injectables याद रखो ये injectables दोबारा रिपीट करो type second glass is known as a treated solar lime glass it is having highly hydrolytic resistance so highly hydrolytic resistance glass so ये treated मतलब the surface of this glass is treated with the sulfur dioxide vapors to neutralize the surface alkali surface के ऊपर जितना भी alkali होगा सोडियम से बोरॉन that will be neutralized by sulfur dioxide fumes so type second is treated solar lime so treatment of sulfur dioxide and it is used for the buffered aqueous solution pH 7 for dry powders and for oily solutions. Type 3 is known as a soda lime glass and it is used for the container made from soda lime glass. They are used for dry powders and oily solution. Now next one is a type known as a general purpose soda lime glass. Okay, general purpose soda lime. General purpose मतलब general purpose. जैसे टैबलेट का कंटेनर होगा आपका फिर नॉन पेरेंटल जैसे सिरप सॉल्यूशन एलिक्सिर हो गए so general purpose soda lime glass okay, they are used for non-parental container like container for tablet container for oral solution syrup suspension ointment liquids for external use etc these are the different type of glasses इसके ऊपर क्वेश्चन आता है दो दो तीन बार रिपीट किया है मैंने और 100% क्वेश्चन आता है जीपीएट तो आपके 2 या 3 मार्क्स जाना नहीं चाहिए आप ट्राई टू मेक द नोट्स और अदरवाइज कीप इन माइंड दैट इज इम्पोर्टेंट ऑलरेडी इट इज प्रेजेंट इन माय बुक में है ये सब उनके पास इसके ऊपर भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है modification of glass to avoid the deleterious effect of glass to avoid the deleterious effect of the light on glass glass is transparent for the light that's why that light can get entry direct the your product will be exposed directly to the light because glass is transparent so the light may cause photohydrolysis of your product or that may alter your product that may that may bring any change in the product photolysis or photohydrolysis photooxidation so to avoid that so you have to make certain changes in the glass so you have to impart the color in the glass इसके ऊपर भी एक बार क्वेश्चन आया था कि कलर ग्लास कैसे बना to avoid the deleterious effect of light glass can be colored in the following ways so different color कैसे देंगे ग्लास को okay first one is carbon and sulfur okay carbon or sulfur or iron carbon and sulfur or iron and manganese इनका कॉम्बिनेशन इनकी जोड़ी है देखो carbon and sulfur and iron and manganese so they can cause amber color glasses ये amber color glass जो होता है that is made by addition of this sulfur or iron carbon or sulfur or iron and manganese इसके ऊपर so addition of iron or manganese or sulfur or carbon and sulfur or iron and manganese will impart amber color to the glass याद रखो they will impart amber color to the glass. Compounds of cadmium and sulfur. If you add these compound cadmium and sulfur in the glass, so they will impart yellow color to the glass. Then cobalt oxide and cupric oxide. They will impart blue color to the glass. Then again iron oxide, manganese dioxide and chromium dioxide. They will impart green color to the glass. कि आपने देखा होगा ग्लास के भी कलर्स होते हैं ऐसा नहीं कि ट्रांसपेरेंट ही ग्लास तो to prevent the decomposition of your product by light so you need to change the color of glass okay so you can change the color of glass or you can impart the different kind of colors to the glass by addition of different kind of substances so for adding by adding carbon or sulfur or carbon and sulfur or iron and manganese you can impart amber color to the glass by addition of compound of cadmium and sulfur you can impart yellow color to the glass by addition of cobalt oxide and cupric oxide you can make blue colored glass by addition of carbon iron oxide manganese dioxide and chromium dioxide you can produce green colored glass okay so this chart is again very important इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है two types of okay now this was regarding the glass now next we'll see next material construction is nothing but the rubber आपका हो गया metals हो गया steel हो गया आपका iron हो गया उसके बाद में आपका glass हो गया उसके बाद में आएगा rubber because these 3-4 material are most frequently used in the pharmaceuticals and any other so जैसे आपका ग्लास कंटेनर होगा या फिर आपके पास में कोई मेटल लगेगा आपको कंस्ट्रक्शन करने के लिए कंटेनर के लिए ग्लास लगेगा बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन स्टील्स वगैरह के लिए भी ग्लास देन रबर थर्ड वन इज रबर फोर्थ वन विल बी aluminium fifth one will be your plastic
So there are two types of rubber available in the market to be used in the pharmaceutical industry. Okay, two types of rubber. So first one is a natural rubber. Natural rubber. So it is nothing but the polymer of your natural rubber. Rubber क्या है? It is a polymer of isoprene unit. C3H5. C3H5 means isoprene. Okay? C3H5 means isoprene. So it is a polymer of isoprene. C3H5 bracket में N number. That is nothing but the natural rubber. Okay, so it is obtained as a latex of rubber trees. It is obtained from latex of rubber trees. रबर का trees होता है, बड़े बड़े पेड़ होते हैं उसके, उसको काट के जो latex निकालते हैं, वो latex से फिर रबर होता है. Polymer of isoprene unit as a latex from rubber tree, and it is elastic in nature and can be stretched easily. When the least it can regain original form. Means देखो रबर को आप खींचेंगे so it can be stretched, and when you release it, it can regain the original form. So that is nothing but the property of rubber. We'll just take the time. Okay, 10 मिनट में आप. So natural rubber is nothing but the polymer of isoprene unit. Now next one is a soft rubber. Okay, soft rubber. Next one is a soft rubber. It is a naturally occurring polymer of isoprene C5H8 resistant to dilute acid and alkali. Soft rubber is resistant to acid and alkali but can be attacked by oxidizing medium, oils, organic solvents, etc. So oxidizing agent or oxidizing media, then oils and organic solvent can attack on this rubber. Carbon black is added to make. So carbon black जितना ज़्यादा ऐड करेंगे उतना रबर क्या होगा, हार्ड होगा. So carbon black is added. याद रखो, carbon black is added to make the rubber hard. For example, टायर जो होते हैं, बस का टायर, गाड़ी का टायर, आपका टू व्हीलर का, फोर व्हीलर, so they are made by addition of more carbon black in the soft rubber. Tubes, conveyor belts are they are used for in the industry. जैसे पैकिंग टैबलेट हो गया आपका, मैन्युफैक्चरिंग टैबलेट बन गया आपका 1 लाख टैबलेट का बैच, अभी उसका पैकिंग भी हुआ है, लेकिन पैकिंग हो गया, एक स्टेप बाय स्टेप पैकिंग होता है, ठीक है, वो निकल गया था स्टेप, तो उसको एक जगह पे लाना के लिए कन्वेयर बेल्ट यूज करते हैं. So that conveyor belts are made of rubber only. Why? That is made up of soft rubber. Now next one is a hard rubber. Next one is a hard rubber. So hard rubber, soft rubber is mixed with the sulfur and treated. Okay. Soft rubber is mixed with the sulfur and heated. क्या करने का है? Soft rubber के साथ में sulfur mix करो और उसको heat करो. Okay. Now that sulfur, the heated mass can be set into different shape. Soft rubber plus sulfur and heat. So whatever mass you are getting, that can be molded into any shape. So that sulfur causes cross-linking of polymeric chain of a rubber. Okay, addition of sulfur will cause cross-linking in the polymers of rubber, and that the process is known as a vulcanization of. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. Vulcanization of rubber. Vulcanization means hardening of rubber. Vulcanization means hardening of rubber. So how rubber is hardened by addition of sulfur. Okay, and that's why sulfur is used as a vulcanizing agent. 2-3 बार क्वेश्चन पूछा है. One of the following is a vulcanizing agent in the rubber. So sulfur is used as a vulcanizing agent. So it causes the cross-linking of rubber polymer. That is okay. Cross-linking करेगा ये. Cross-linking की वजह से क्या होगा? Now soft rubber में क्या है? थोड़ा बहुत linearity है, linear polymer है. तो यहाँ पे सल्फर की वजह से क्या हुआ है? Cross-linking हो गया, तो hardening हो गया. So hard rubber बन गया आपका. So hard rubber can be made from soft rubber by addition of sulfur. That is a vulcanization process. Remember, समझ लो का vulcanization काय असतं. You got what is meant by vulcanization? आपके कॉलेज में ये पढ़ाया नहीं होगा. What is vulcanization of rubber and all that? Because nobody cares. Okay, so hard rubber can be made from soft rubber. Now we'll see the next point. That is synthetic rubber. Next one is synthetic rubber. Types of rubber कितना है? Natural rubber, soft rubber, hard rubber and synthetic rubber. ये types है. Now synthetic rubber will have advantage over natural rubber or some properties like resistant to oxidation, solvent and other chemicals. So synthetic rubber will have little bit advantage over natural rubber. So synthetic rubber will be resistant to oxidation. It can withstand with the solvents and oils and chemicals. So vulcanization of rubber. उसके बाद में अपन देखेंगे next slide. That is again very important. This slide is again very important. 2-3 बार क्वेश्चन आया इसके ऊपर. Different additives used in the rubber to modify the physico-chemical properties of your rubber. ठीक है, इलास्टिसिटी चेंज करना है, कलर चेंज करना है, उसके लिए different additives यूज करना है. ओके, different additives used in the rubber. ये क्वेश्चन GPAT 21 में as it is था. एक कॉलम में दिया था आपको ये सब, एक कॉलम में दिया था ये सब. So first we'll see category of additives. What are the different additives added in the rubber to modify the physico-chemical properties of the
रबर का चेंज करने के लिए एग्जांपल्स, उसका एग्जांपल क्या है? नाउ फर्स्ट वन इज एक्सेलरेटर. ओके, एक्सेलरेटर्स. सो अमाइंस, thiol, thiouram compounds, sulfamide, sulfamide and urea. These are used as an accelerator to increase the vulcanization process, speed of vulcanization process, to increase the speed of vulcanization. Now activators, stearic acid, zinc oxide, zinc stearate, amine, paraffin wax, they are used as activators. Next one is vulcanizing agent. So as I have told you, sulfur is used as a vulcanizing agent. Sulfur, sulfur, organic peroxide and phenolic resins. Sulfur, organic peroxide and phenolic resin. They are used as a vulcanizing agent. Next one is a pigment. Pigment are added to impart the color to the rubber. आपने देखा होगा कोई रबर ग्रीन कलर का होता है, कोई रबर येलो कलर का. So carbon black is used for imparting the black color. Chromium oxide is used for the imparting the red color. Iron oxide is used for red color. Then plasticizers and lubricant used in the rubber. So paraffin, mineral oils, fatty oils, organic phosphates and phthalates, they are used as a plasticizers. Now next one is the fillers and reinforcing agent. So aluminum and calcium silicate, titanium dioxide mostly is used as a opacifying agent. Titanium dioxide, opacifier. Carbon black colorant is silicon, barium sulfate. They are used as a fillers or reinforcing agent. Reinforcing agent. So these are the different additives used in the role. इसके ऊपर GPAT 2021 में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है इसके ऊपर. So either they can ask direct question. One of the following is a vulcanizing agent used in the one of the following is a vulcanizing agent for rubber. ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे या फिर आपको मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे. तो याद रखो, एक्सेलेरेटर कौन है, एक्टिवेटर कौन है, वल्कनाइजिंग एजेंट कौन है, पिगमेंट कौन से है, प्लास्टिसाइजर लुब्रिकेंट कौन है, एंड फिलर्स एंड रीइंफोर्सिंग एजेंट कौन. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसके ऊपर 2 बार जीपैट में चैप्टर वाइज लिखे. नाउ सम वैरायटीज ऑफ सल्फर. कितने वैरायटीज ऑफ रबर. नाउ फर्स्ट वन इज डिफरेंट वैरायटीज ऑफ सिंथेटिक रबर. दो टाइप का रबर है आपका, नेचुरल वन एंड सिंथेटिक वन. So synthetic rubber की कितने वैरायटी? First one is a neoprene rubber. Neoprene rubber is known as a polychloropene. Okay, polychloropene. Neoprene rubber is a polychloropene. Okay. So what is the property? Do not burn readily like natural rubber. Stable at a high temperature. So it is a high temperature के ऊपर भी stable रहता है. So that's why. So whatever the closures are there, they are made up of. So it can withstand with a high temperature. Neoprene rubber. Now it is used as an insulating material for electric cable, conveyor belts in coal mines, and rubber stopper, cap liner, and dropper used in the eye drop. Eye drop आपने देखा होगा, उसके ऊपर एक black color का rubber होता है. That is a neoprene rubber. Nitrile rubber. Second one is a nitrile, resistant to oil and solvents. Third one is a butyl rubber. Types of rubber. Butyl rubber, resistant to mineral acids, alkali and concentrated acid, except सल्फ्रिक एंड नाइट्रिक एसिड. एक्चुअली ये ब्यूटाइल रबर जो है दैट इज रेजिस्टेंट टू एसिड एक्सेप्ट सल्फ्रिक एंड नाइट्रिक एसिड. सो इट इज यूज्ड फॉर क्लोजर. इट इज यूज्ड फॉर क्लोजर ऑफ फ्रीज ड्राइड प्रोडक्ट. कंटेनर के बाद में कंटेनर के ऊपर जो क्लोजर होता है पर्टिकुलरली फॉर फ्रीज ड्राइड प्रोडक्ट. So it is used because it has a low water vapor permeability. And even the freeze dried product are very sensitive to water. And next rubber is the silicone rubber. It is known as a polysilicons. Silicone rubber or polysilicons. Silicone rubber or polysilicons. Okay. These are again resistant to high and low temperature. Then resistant to attack of organic solvents and oils. गैसेस. सिलिकॉन रबर इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, ये फ्लेक्सिबल रहेगा थोड़ा, ये भी फ्लेक्सिबल रहेगा, ये भी फ्लेक्सिबल रहेगा, लेकिन ये उतना फ्लेक्सिबल नहीं. सिलिकॉन रबर. आइसोप्रीन रबर, स्टेबल एट हाई टेम्परेचर, ट्रांसलूसेंट एंड फ्लेक्सिबल. दीज आर द डिफरेंट वैरायटीज ऑफ रबर. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि नाइट्राइल रबर किसमें यूज होता है, नियोप्रीन रबर किसमें यूज होता है, इसके ऊपर भी कैसा क्वेश्चन आता है. रिमेंबर दिस नियोप्रीन रबर विल नॉट बर्न रेडीली. एसिड को रेजिस्टेंट कौन सा है, ब्यूटाइल रबर. टफ रबर कौन सा है, सिलिकॉन रबर. Then now last one is the plastics. They are semi-synthetic resin containing long chain polymer of polyethylene. Polyethylene से बनता है ये प्लास्टिक. It is a polyethylene, polymer of polyethylene. लाइट वेट है प्लास्टिक, इजी टू मोल्ड होता है, गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी होता है, रेजिस्टेंट भी होता है उनका. ठीक है. सो दैट्स व्हाई प्लास्टिक. सो पेट बॉटल्स, यू माइट हैव सीन पेट बॉटल्स और पेट बॉटल कंटेनर इन द your syrups emulsions of milk.
पेट बॉटल यूज करते हैं प्लास्टिक. So it may be thermosettling plastic. There are two types of plastic. Thermosettling plastic. They are formed under heat pressure and once it is cannot be softened or remolded. मतलब there are two types of plastic. First one is thermosetting plastic. Thermosetting plastic में क्या होता है कि ये प्लास्टिक के कलेट्स अगर आपने हीट किए एक ही बार में आपने मोल्ड किए तो उसको रीमोल्डिंग नहीं कर सकते. जैसे फॉर एग्जांपल प्लास्टिक की चेयर बनाते समय ही उसका हीट करो प्लास्टिक के कलेट को और डायरेक्टली मोल्ड करो. एक बार बन गया तो उसको फिर से रिमोल्ड नहीं कर सकते. दैट इज नोन एज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक फॉर्म्ड अंडर हीट एंड प्रेशर once it is hard you cannot make it soften and remold. That is a thermosetting plastic. Now second one is a thermoplastic plastic. This type of plastic can be remolded and softened. जैसे एक बार बना उसके बाद में उसको remold कर सकते soften कर सकते. That is a thermoplastic plastic. Thermosetting plastic and thermoplastic. Now polyethylene मतलब क्या? Polyethylene type of plastic is used for cables, buckets and pipes. So whatever buckets you are using for the bathing, that is made of polyethylene. Cables are also made of polyethylene. Pipes are also made of polyethylene, PVC pipe. Then polypropylene, milk cartons and ropes. जैसे रस्सी हो गया आपका मिल्क का जो मिल्क की जो थैली आती है दूध बैग जे पण polypropylene. Next polyvinyl chloride, PVC. So gloves, waterproof garments, they are made of polyvinyl chloride. Then Teflon is used for gasket and coating. So this was our today's session from material construction. Now we'll see the remaining point in the upcoming sessions. आज का समझ में आया आपको? हेलो.